नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, आइए देखते हैं इस बुलेटिन में। पादरा में कार्यरत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की ओर से 4 दिन की बाल व्यक्तित्व प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई गई है, जिसके पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेताओं को इनाम वितरित किए गए। पादरा नगर और ग्राम्य में 5 से 18 साल की आयु के बच्चों के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 4 दिन की बाल व्यक्तित्व प्रतियोगिताओं की शुरुआत करवाई गई है, जिसके पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें 400 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। वैसे इन प्रतियोगिताओं के बाद सत्संग सभा का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर पादरा के दानवीर सेठ परिवार के मुकेश ठक्कर विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। ऐसे आपको बता दें कि प्रतियोगिताओं के अंत में विजेता बच्चों को इनाम भी दिए गए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज पर्यावरण दिवस को महत्व देते हुए विशेष बाल विकास का कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें पादरा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पिछले 78 से चल रहा है, 1978 से चल रहा है और उसका विकास होते होते आज एक भव्य सेवा केंद्र यहाँ स्थापित हुआ है। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ बाल विकास का 4 दिवसीय कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें बच्चों को और उनके माता पिता को कैसे शिक्षित किया जाए कि माता पिता बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें और बच्चे अपने जीवन में बचपन से ही जिन बातों को अच्छी तरह समझेंगे और बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चा शिस्तबद्ध बने, तो ये भी एक विद्यालय है। यहाँ उन्हीं बातों को सम्मुख रखते हुए उन बातों पर प्रकाश डाला गया कि जो बच्चे बाल्यकाल से जिन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो ज़रूर उनकी बुद्धि का विकास उन्हीं अनुरूप होगा। तो बच्चों को लिए कई प्रकार के प्रोग्राम रखे गए, उनको ज्ञान से शिक्षित किया गया। जूनागढ़ में गिरनार पर नेचर फर्स्ट और उषा ब्रेको कंपनी की रोपवे टीम की ओर से विश्व पर्यावरण दिन को मनाते हुए प्लास्टिक मुक्त अभियान का आयोजन किया गया। हर जगह विश्व पर्यावरण दिन को अलग अलग तरीके से मनाया गया। ऐसे में जूनागढ़ से यह खबर सामने आई है, जहां पर नेचर फर्स्ट और उषा ब्रेको कंपनी की रोपवे टीम की ओर से एक सराहनीय कार्य किया गया। दरअसल विश्व पर्यावरण दिन को मनाते हुए नेचर फर्स्ट और उषा ब्रेको कंपनी की रोपवे टीम गिरनार पर्वत पर पहुंची और वहां पर सभी ने मिलकर प्लास्टिक मुक्त अभियान किया, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा कर उसे नष्ट किया गया। जूनागढ़ के केशोद में रोटरी क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया गया है, जिसके तीसरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव को धामधूम से मनाया गया। केशोद में रोटरी क्लब की ओर से कई सेवाकीय कार्य करवाए जाते हैं। कोरोना महामारी में जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को गंवा दिया है, ऐसे में इन लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो, इसी आशय से रोटरी क्लब की ओर से भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया गया है। भागवत सप्ताह के तीसरे दिन वक्ता प्रदीप भाई की ओर से कृष्ण जन्म महोत्सव की कथा सुनाई गई, जिसके चलते तीसरे दिन कृष्ण जन्म महोत्सव को धामधूम से मनाया गया। आज वडोदरा जिला की कचहरी पर IOCL की ओर से गैस सिलेंडर की एजेंसियों के लिए लकी ड्रॉ रखा गया था, जिसके तहत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के निवासियों के लिए उज्ज्वला योजना की घोषणा की गई थी, जिसके चलते महिलाओं को अब गैस कनेक्शन मिला है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की ओर से गैस के सिलेंडर लोगों तक पहुंचाकर एक अच्छा कार्य किया गया है। वैसे आपको बता दें कि वडोदरा जिला कचहरी पर IOCL की ओर से आज गैस सिलेंडर की एजेंसियों के लिए लकी ड्रॉ रखा गया था, जिसमें IOCL, HPL, BPL जैसी सरकारी कंपनियों ने हिस्सा लिया। वैसे इसका सीधा फायदा
उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को और सरकार को होगा। इस लकी ड्रॉ में गुजरात भर में से एजेंसी के तौर पर फॉर्म भरने वाले कई लोग पहुंचे थे। અને ઇન્ડિયન ઓઇલની ગેસ એજન્સીના એલપીજી જે કનેક્શન બાટલા માટે એમનો ડ્રો રાખેલ છે અહીંયા કંપનીએ। એમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ, બીપીસીએલ અને એચપીસીએલ જે નરેન્દ્રભાઈની સરકારની ઉજ્જવલ યોજના છે એ અનુસંધાને અત્યારે જે સરકાર ચલાવી રહી છે એમાં કંપનીઓ પણ અત્યારે સાથ અને સહકાર આપી અને સરકારને અભિગમ આગળ વધારી રહી છે। આનાથી લોકોને ખૂબ જ ફાયદો થશે, ગ્રાહકોને વધારે ફાયદો થશે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને તો જે કમિશન આવતો એ જ આવતું હોય છે અને સરકારને પણ ફાયદો થશે આનાથી। અમારો તો સુરત માટે આવ્યો છું, બાકી તો ઘણી છે બધી। અત્યારે આ બધાનો આ કેન્ડિડેટ બધા આવ્યા, ફોર્મ ભર્યા હોય ને જાણે આઈઓસી, એસપીસીએલ, ઇન્ડિયન ઓઇલના બધાના, એટલે બધા આવ્યા છે। नर्मदा राजपीपला में नौधारानो आधार के तहत कई ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर सराहनीय कार्य किए जाते हैं। ऐसे में राजपीपला के टेकरा फलिये में रहने वाली दो बहनें शकुबेन वसावा और भारतीबेन वसावा को नौधारानो आधार प्रोजेक्ट के तहत हियरिंग एड की सुविधा मुहैया करवाई गई, जिससे कि सालों से ना सुन पाने वाली दोनों बहनों को सुनाई देने लगा। इसके अलावा इन दोनों बहनों को रोजगार के लिए सिलाई मशीन भी दिया गया, जिससे कि उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो सके। मारू नाम रमीलाबेन है। अमारी बने नरंदो है, एक बेरी है और गूंगी है। ये जन्मथी ज गूंगी बेरी है। नोंधाराना आधार में मारी ननदों ने सरकार तरफ प्रोजेक्ट आप्यो है, कान में सांभळवानुं मशीन अने सिलाई मशीन आप्युं छे। पहला मारी ननदो घरकाम करीने घर चलावती हती। सरकारश्री तरफथी एमने जे लाभ आप्यो छे एनाथी एमनुं जीवन गुजरान चाले छे। गुजरात सरकार द्वारा अमने जे सिलाई मशीन आपवामां आवेल छे ए माटे हूँ सरकारनो आभार मानु। वाघोडिया में कार्यरत शंकर पैकेजिंग लिमिटेड कंपनी की ओर से बीते कई वक्त से कर्मचारियों को वेतन नहीं चुकाया गया है, जिसके चलते परेशान हुए कर्मचारी आज कांग्रेस के नेता सत्यजीत सिंह गायकवाड़ के साथ इस मामले को लेकर लेबर कमिश्नर की कचहरी पर पहुंचे। वाघोडिया जीआईडीसी में शंकर पैकेजिंग कंपनी बीते कई सालों से कार्यरत है। इस कंपनी के कर्मचारियों ने कोरोना महामारी की विकट परिस्थिति में भी अपना कार्य जारी रखा था। हालांकि कई वक्त से शंकर पैकेजिंग कंपनी की ओर से कर्मचारियों को उनका वेतन मुहैया नहीं करवाया गया है। ऐसे में परेशान हुए कर्मचारी आज इकट्ठा हुए। कर्मचारियों की ओर से यूनियन के अग्रणियों की उपस्थिति में लेबर कमिश्नर की कचहरी पर पहुंचकर मामला प्रस्तावित किया गया और सूत्रोच्चार कर कंपनी के सामने विरोध भी जताया गया। वैसे इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के नेता सत्यजीत सिंह गायकवाड़ की भी मौजूदगी रही। यहाँ लेबर कमिश्नर में आया है। अमरो जे चौथा महीना में अमे 15 दिवस नौकरी करी थी, जो पगार अमने चूकवायो नहीं। अमे 18 तारीखे अहींया आपवा आया था अरजी करवा माटे। अमारी अरजी लीधी पण हजू आज 2 महीना होवा छतां अमारो पगार कोई स्वीकार्य नहीं। अने आज 50 दिवसथी अमे स्ट्राइक में छे। अमारा घणा एवा मुद्दा छे, घणा अमारा लीडरोने छूटा करी देवामां आव्या छे। अमारो पगार घणो ओछो करी देवामां आव्यो छे। ज्यारे 2019 में अमारो पगार 17-18 हज़ार हतो, ए घटाडीने आज 8,000-9,000 पगार करी देवामां आव्यो छे। अने प्लस बीजू के अमारो अमे जो अमन जबरदस्ती करीने अमारा युनियन लीडरोने हटावीने अमारुं युनियन हटावीने गैरकायदेसरनी कमिटी बेसाडवामां आई छे। कैमेरा बंद करीने एचआर विभाग बधुं मैनेजमेंट इकट्ठा भेगा थईने वर्करोने धक धमकी आपीने खोटी गैरकायदेसरनी कमिटी बेहाड़ी है और एमनुं मन फावे ए रीतना सेटलमेंट करे छे, मन फावे एवो पगार करे छे और मन फावे त्यारे पगार करे छे और मन फावे त्यारे लोकोने छूटा करे छे। अमारी घणी बधी मांगो लईने अमे आज 50 दिवसथी हड़ताल पर छे અને આજે અમે અહીંયા લેવલમાં ફરી આવ્યા હતા। એમને આશ્વાસન આપ્યું છે। હવે જોઈએ કે આગળ શું થાય છે કે પછી અમારે હજુ રોડ ઉપર રહેવું પડશે આગળના દિવસો। વાઘોડિયા મુકામે આવેલી શંકર પેકેજિંગમાં ગયા 50 દિવસથી વર્કરો સ્ટ્રાઇક પર છે। વર્કરો એમની માંગણીને લઈને મેનેજમેન્ટને અને લેબર કમિશનરે વારંવાર મળ્યા હોવા છતાં ત્યાંની રાજકીય પરિસ્થિતિના કારણે આ લોકોને ન્યાય મળતો નથી। કોરોના કાળ પહેલાં જે આ લોકોનો પગાર હતો, મિનિમમ પગાર આ એક વર્કરનો 12 કલાકનો 18,000 રૂપિયા પગાર હતો। એ કોરોના પત્યા પછી કોરોના દરમિયાનમાં પણ વર્કરે 8 કલાકને બદલે 12 કલાક કામ કરીને કંપનીનું કામ કાઢ્યું। તેમ છતાં પણ કંપની કોરોના પત્યા પછી જ્યારે વર્કર ફરી કામે લાગ્યા ત્યારે એમનું એચઆરએ કમ્પ્લીટ નાબૂદ કરી
ને જેમને 18,000 પગાર મળતો હતો એમને 8,000 ને 7,000 ને 6,000 પગાર ઉપર કંપની જબરદસ્તી કામ કરાવતી હતી. વર્કરોએ સ્ટ્રાઇક કરી છે, 50 દિવસથી વર્કરો રજળે છે, રસ્તા પર છે, પણ આજ દિન સુધી રાજ્યની સરકાર કે લેબર કમિશનર, લેબર સેક્રેટરી કે લેબર મંત્રીએ કશું એમાં દખલ કરી નથી. જે વર્કરો સ્ટ્રાઇક પર ઉતર્યા એ પહેલાંના એમને 15 દિવસના કામ કર્યું છે, એ કામના PFની રકમ કંપનીએ સરકારમાં જમા કર્યો છે. એનો મતલબ એ થાય કે ચોપડા ઉપર આ લોકોને પગાર ચૂકવી દીધેલો છે એવું બતાવી અને આ લોકોને પગાર આપતા નથી. એ ક્રિમિનલ ઓફેન્સ હોવા છતાં લેબર કમિશનર કશું એક્ટ કામ કરતી નથી, કોઈ કાયદાકીય જોગવાઈ નથી. અસંખ્ય કેસો શંકર પેકેજિંગ ઉપર થયેલા છે પણ એ લોકો બચી જાય છે કારણ કે મિસ્ટર વિક્રમ પાંડે એ યુપીના છે અને એના કારણે એ લોકો બચી રહ્યા છે. 5-5, 7-7 ફેક્ટરીઓ વર્કરોના પસેવાના, ખૂન પસેવાના, મહેનતથી કમાયેલા પૈસા ઉપર 6 ફેક્ટરીઓ ખોલી પણ વર્કરોને ન્યાય આપવામાં તેઓ चिनौर के अवाखल रोड के पास नर्मदा कैनाल की ओर जा रही सड़क पर एक गाय बीते कई दिनों से मृत अवस्था में पड़ी हुई है। हालांकि गाय के मालिक या फिर प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी सूद नहीं ली जा रही है, जिसके चलते वहां पर गंदगी बढ़ रही है और दुर्गंध से लोगों का हाल बुरा हो रहा है। ऐसे में वहां से आवाजाही कर रहे स्थानीय काफ़ी परेशान है और इस गाय के मालिक के सामने स्थानीयों की ओर से रोष जताया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीयों की ओर से मांग की जा रही है कि गाय के मालिक को ढूंढकर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आदिवासी समाज के चंद्रकांत भाई तड़वी, जिनकी एक हादसे में 51 साल की उम्र में मौत हो गई। हालांकि उनके निधन के बाद उनके परिजनों ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया, जिसके चलते SSG अस्पताल में आज आदिवासी समाज और अन्य समाज के लोग और साथ ही चंद्रकांत भाई तड़वी के परिजन इकट्ठा हुए और उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए उनके वतन तक ले गए। वैसे इस मौके पर SSG अस्पताल के पूरे स्टाफ की भी मौजूदगी रही। चंद्रकांत भाई भाईलाल भाई तड़वी, उम्र वर्ष 51, જેમનું ઝઘડિયા GIDC બાર માર્ગ અકસ્માત થયો હતો અને તેમને વધુ સારવાર માટે વડોદરા સ્પંદન હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા, પરંતુ એમને એક અત્યંત અને પ્રેરણાદાયક અને આદિવાસી સમાજમાં એક પ્રથમ એવું ઓર્ગન ડોનેશનનું કામ જે કર્યું છે, એમના પરિવારે જે નિર્ણય લીધો છે એ ખૂબ જ સરસ છે અને એક પ્રેરણાદાયક છે. મર્યા પછી પણ તમે લોકોના શરીરમાં જીવતા રહો, એક ઉત્તમ એમને એક સંદેશ આપ્યો છે અને હંમેશા સમાજ આવા કામ માટે અગ્રેસર રહે એવી મારે બધાને પ્રાર્થના છે. આપે મર્યા પછી આપણા શબને સળગાવીએ અથવા દફન કરીએ એના કરતાં આપણે કોઈનો ઉપયોગ થઈએ એવો એક એમને સારો અને સુંદર મેસેજ આપ્યો છે, જેથી કરીને હું સમગ્ર આદિવાસી સમાજ તરફથી એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું અને એમના પરિવારે આ જે નિર્ણય લીધો એમને બિરદાવું છું. અને સાથે સાથે દેશમુખ દાદાએ જે પહેલ કરી છે આપણા ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને વડોદરામાં ડૉક્ટર વિજય શાહ સર, હેમાંગ જોશી અને જે આખી ટીમ અત્યારે કાર્યરત છે ઓર્ગન ડોનેશન અવેરનેસ માટે, એ તમામને હું કહું છું કે દરેક સમાજમાં એક અવેરનેસ કાર્યક્રમ કરે અને આનો એક સારો મેસેજ આપે. ધન્યવાદ. મરનાર વ્યક્તિ છે એ અમારા નાના બહેનના હસબન્ડ થાય, એટલે આમ તો અમારી ભાષામાં તો જમાઈ કહેવાય પણ આપણી કાનૂની ભાષામાં બનેવી કહેવાય. અને એ GIDCમાં સેન્સેક્સ કંપની ઝઘડિયા એમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરતા હતા. બીજી તારીખે એમની નાઇટ હતી, નાઇટ પતાવીને સવારમાં ઘરે જવા માટે નીકળ્યા. ત્રીજી તારીખે એમની બેબીની બર્થડે હતી એટલે એ ઉત્સાહમાં એ ઘરે જવા માટે નીકળ્યા. પરંતુ પછી બનાવ એવો બન્યો, CCTV કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કરતાં કમ્પ્લીટ 7 વાગ્યે ભાઈ ગેટની બહાર નીકળ્યા અને મેઇન રોડ પર ટર્ન લઈને જતા હતા. એટલામાં એક R15 નંબર ગાડી, મોટી મોટરસાઇકલવાળો ધમ્મ દઈને ફૂલ સ્પીડમાં નીકળ્યો ને એ ભાઈ એને પાછળથી ઉડાવી દીધા. જે ફૂટેજ પ્રમાણે આવું જણાય છે. ત્યાર પછી ત્યાંથી GIDCમાં એમના કંપનીવાળા જે માણસો હતા એ લોકો 108માં બરોડા હાટમાં ભરૂચ દાખલ કરી ગયા, પરંતુ ત્યાં આગળ એમને કંઈ પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ મળી નહીં. અને ત્યાર પછી અમે સ્પંદનના ડૉક્ટર મિસ્ટર અમિત પંચાલનો કોન્ટેક કર્યો તો એમણે કહ્યું કે ભાઈ આપણે હોસ્પિટલમાં લઈ આવો. પછી અમને અહીંયા લઈ આવ્યા. અહીં લઈ આવ્યા પછી 3જી તારીખે એમણે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. 4થી તારીખે રાત્રે એમણે કહ્યું કે કોઈક રિસ્પોન્સ મળતો નથી અને અમને એવું લાગે છે કે બ્રેઇન ડેડ થઈ ગયું એવું લાગે છે. પછી એમણે બ્રેઇન ડેડને માટેના ટેસ્ટ જે જરૂરી હોય એ ટેસ્ટ કરવાના ચાલુ કર્યા. 24 કલાક દરમિયાન ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખ્યા.
પણ કોઈ રિઝલ્ટ ના મળતા આખરે 5મી તારીખે એમણે ડિક્લેર કર્યું કે ભાઈ બ્રેઇન ડેડ છે, જેથી હવે એમના જેટલા જીવત અંગો છે એ તમે જો ડોનેટ કરો તો કોઈક બીજા 5-6 માણસોની જિંદગી બચી શકે. એટલે પછી અમે પરિવારમાં બધાની જોડે સંકલન કરીને વાતચીત કરતાં એમણે કહ્યું કે ભાઈ કોઈકની જિંદગી બચતી હોય તો આ મોટામાં મોટું કાર્ય છે. પણ એ જ્યારે જીવતા હતા ત્યારે પણ અમારી ગમ્મતમાં કહેતા કે ભાઈ તમારા પાસે તો બધું છે એટલે તમે બધાને મદદ કરો. મારા પાસે તો કશું નથી, મારા પાસે મારું એટલું શરીર છે તો હું એમ કે મારું શરીર દાન કરીશ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.